Congratulations to you, firstly. Thank you. So how are you feeling? Very relaxed, especially after the SIDBI result. Also, the fact that I was able to get the 7th rank in the merit list. Oh, that's great. That was also very motivating for me. That if I put my efforts in the right direction, I can achieve better goals, even higher goals in the future. Yes, of course, Abhishek. And I remember that you had left your well-paying job to get into government sector, right? Yes, ma'am. So can you tell me that what made you, actually go for this direction? Ma'am, even before joining Deloitte, my aim was about government services only. But I wanted to join Deloitte or any other multinational company post my graduation. There were 3 reasons primarily. First, I wanted to experience what a corporate life is all about. We cannot just judge from the outside. I wanted to experience it firsthand. Then, secondly, I wanted to ensure that I have enough savings which finance all my coaching, study material, everything on my own. Because I feel I uh, at this particular age, you should be able to finance your own study requirements. I felt that my quota of asking from my parents for financial help was over, and now I need to be independent in that regard. And lastly, if ever things didn't work for me, because after all, it's all competitive exams, and even after, despite your best efforts, sometimes it's not in your luck that you might succeed. So you should always have on your resume something on which you can fall back. And Deloitte, working in Deloitte, really helped me to become a better professional. And in both my interviews, both in IBPS PO and in SIDBI, they even asked me that you work in Deloitte, and it's a big company. So why you left that job? So, and I explained to them the same reasons, and also it gave them a positive impression that this person, or not apart from having the knowledge, also has professional experience. Right. So you think that having a prior experience worked in your favor? Definitely, ma'am. Because if I say so, in the IBPS interview, the interview lasted just about 10 minutes. Because in IBPS PO, the batch size is huge, and the panel members don't have enough time to conduct lengthy interviews. For example, a 15 or 20 minutes interview. Mine lasted just about 10 minutes. So, and my interview marks were very good, and based on which it helped me to pass the IBPS PO exam. So I felt that my resume, my good CGPA in my graduation, and my work experience with Deloitte played a major role in that. Okay, Abhishek. So, you mentioned that your good CGPA as well Yes, as your work experience helped you. yes, But, ma'am. there are many other candidates who do not have these things, right? Mhm. They may not be excellent, they may not have been so good in their studies, and maybe that they are just applying immediately after their college. Mhm. So, what do you think should be, the way forward for them? How should they prepare? What should they expect? And if there are candidates who are applying just after their graduation, and if they reach the interview stage, they should try to communicate to the panel that they are very passionate about learning about this job. I remember Sanjeev sir telling me that your answers should reflect the passion for this job. So if a young candidate at the age of 21 or 22 is able to convince the panel members that I have the passion to learn on this job on the go, then I think that's a positive thing. And if I will always recommend that if you can get a job from campus placement, that is very good. Even if you do just for 1 year, do it. It adds value to your resume. It also teaches you a lot of things. Money management is also very important that you learn from a job. Right, Abhishek. So, about, like as you mentioned that you cleared IBPSPO as well as SIDBI Yes, interviews, ma'am. right? Can you just give us a brief idea that what were the questions about? What did they ask? How were you feeling? What made you nervous? Or what was In it the that interview, actually calmed you? Yes, the questions, yeah. please. Okay. For the IBPS PO, as I earlier mentioned, the interview just lasted about 10 minutes. So if future candidates who will be appearing for the interview,
in the next year, they have to be prepared for such type of an interview. And such type of an interview is more like a viva voce. It is more a rapid fire type of questions. Just one question from one panel member, then another question, then another question, just like that. So don't panic in that situation. And if your interview lasts just about 5 to 7 minutes, don't worry that your marks will be very low. It might be that you might get a very good marks in just those 5 to 7 minutes of interaction. And in SIDBI, the interview lasted about 20 minutes, and that was a more slow-paced interview compared to IPPS because obviously there were less number of candidates. So they primarily asked me about economic affairs. So I think if you have your basics of So they, economics, as in you're telling me about the IBPS interview first? no, ma'am, the SIDBI interview. The IBPS Okay. interview was very factual in nature, like what is money laundering, what are Hawala transactions. Like this was first they asked about money laundering. I mentioned something about Hawala in that also. And in later, not immediately, but later, there was a question on Hawala. And SIDBI, there were 3 or 4 major themes, if I recognize. Firstly, they were asking a lot of questions on the basics of economy, basic stuff. Then your basic conceptual clarity must be there. Then, like for example, they were asking me why there is a divergence between CPI and WPI. So I gave the answer to them. And then the second prominent theme was about the role of self-help groups, MSMEs. Thirdly, because I'm from Punjab, so they asked me about the industrial scenario in Punjab. They asked me from where does the name Punjab come from? And the next up question was, can you name the 5 pillars? So this was the question. And apart from a little bit of accounting, now accounting is something which we as only, I think, who have accounts as the educational background can understand better. We who have had a more general study of economy, we know about a surface level information only. And I told the panel members, I know what is a balance sheet, what is a profit loss statement, but details I need to work upon. And they were okay with it. And these questions came in the end on the interview. So you mentioned that the accounts questions were like based on like they are fine for the people who are from that background, commerce background, right? Yes, so you are not from commerce background? No, ma'am, I'm from engineering background. So you're from engineering background and still accounts related question was asked. So why do you think that that field question was asked? What was the purpose? What did they want to judge? I think 2 types of responses. Number one, if they knew that I'm from an engineering background. So if they asked me an accounts question, there were more chances that I didn't know. So they wanted to see what was my reaction if I didn't know an answer. Was I trying to bluff, or would I panic? And I showed no signs of nervousness. I simply replied them that I have a basic understanding of what these concepts are, but I lack the detailed knowledge of it. And in future, I'm going to work upon it. That's it. And secondly, if by chance, if I knew about them, I think they would have added a brownie point to the overall marks. Okay, all right, Abhishek. And Abhishek, I remember you telling me that in your IBPS interview, they asked you about your grooming, about your shave, I think, if I'm Yes, not ma'am. wrong. So yes, Yes, can ma'am. you please tell So I us think that? because the conventional approaches for males are that you should go clean shave in the interview. So that was also my approach. So just when after in the IBPS, they said me have a seat. So I sat down. So I was expecting them to ask me, introduce yourself. So I was ready for that. And the first question they asked that you shaved your goatee. And I was a bit taken aback by it. When I replied, said that this is more a conventional practice that you go with. It's a more formal look, and they tried to keep the mood a bit light. And I was also a bit taken aback that the conventional approach to an interview was not there as I was expecting. So was it the good way, or was it the way that you were not expecting it to be? So were you taken aback by it, or do you Yes, now, when little you bit. look back, you think that okay, that was the fine thing that happened? Yes, ma'am. Because it kind of relaxed me because it started off on a very light note. It was not a very sometimes the interview started a very serious note. In SIDBI, for example, they asked me about my introduction. I gave them a very brisk introduction, and after that, I also mentioned in my introduction that I have
cleared IBPS PO and got allocated to Canara Bank. So the next two questions from the from Am was about the Canara Bank CE and which bank merged with Canara Bank in 2020. I answered them because I was expecting these questions. So this is also Okay. an important element of your preparation, that you should prepare those questions which you should be expected, which should come from your resume. Those questions are more likely to come, which originate from your resume. So why do you say so? You said that, they originate from your resume. Did you write in your CV that you have cleared Actually, about IBPS? that, at that point also, neither did in IBPS PO nor in SIDBI, they asked for the CV. All They right. say, So, what they do is they prepare a bundle of all the documents that you have submitted till then of all the previous examination stages, and then they look into it, because in that application form you have mentioned your graduation and all that, your marks and your work experience. So they look from it. They had in both interviews they not asked the separate CV, although I had taken a printed version of it, but they didn't ask. all right. So when you were in that SIDBI interview, right? So Mhm. do you think, like, there you started with your introduction. So do you Mhm. think that your introduction was fine, or do you think that, something could have been tweaked there? What advice would you give to the students? Because you faced two interviews where once your intro was asked about you, and at the other interview, the things were totally different, right? Mhm. So what do you advise to the students? How should they be prepared, or in what manner? What are the things they should keep in mind for the first question, for the ice breaking time? Yeah. So I think for this, the mock interviews really helped me. And because I remember in the first IBPS PO mock interview, this point was mentioned that my intro is a bit too long. It should be a crisp 3 to 4 lines. Don't mention that I'm from this place, my parents are working in this field, I have been preparing for this much time. My introduction was simple. I graduated from Thapa in 2018, um, then worked in Deloitte for 1.5 years. Post that, working studying for government services, and recently I cleared IPPS examination. And then in the last line, that my hobby is following sports. Because I was expecting that if I mention my hobby, there will be a few questions on my hobby, and I was very confident if they ever ask me about sports, I will be happily able to answer them, because that is something which I really take pride in. Okay, all right. So the gist that you mentioned is that introduction, as we had discussed in your mock interview also, should be short and crisp, To right? the point. And it should be objective, right? Yes, And Abhishek, also, no, so many students have this thing in mind that, okay, I have a job in hand. Should I tell them that I already have a job in hand? Maybe they will not take me. We should hold this information from the panel, or is it fine to reveal? Because you told them that you have been selected in ma'am. IBPS PO, although you didn't have to. So what Mhm. made you decide that, okay, I will tell them? And what do you think were the takeaways from that decision? Firstly, it reflects few essential qualities. Number one, honesty. You know, if I'm clearly upfront with all my background details, and this is not something to be ashamed of, and it is actually an achievement. So you should mention your achievements. So if you have 5 job offers on your hand, or you don't have a job offer on your hand, but if you are the suitable candidate, you will be selected. That should be your ensure your suitability rather than concealing your information. So you think that honesty is the best policy? Did it work for you? Of course it Yes. did, right? Were you honest all the time throughout the interview? Yes, ma'am. Because they asked me mostly questions about general awareness and economics and other related stuff. Surprisingly, there was no question on hobbies. I was because in my mock interview with Sanjeev sir, we had a lengthy discussion on cricket, and he could also tell that I'm very passionate about this game. And I was expecting a few questions from that as well, but really there was not much interest from that side. So I think the conventions of an interview or a personality test are also evolving. IBPS, they asked what are your hobbies, and I mentioned sports. I was expecting few additional questions on top of that, but by the time they said okay, thank you,
So I was like, just Okay. So it does 10 not minutes. always go in the direction that we think it to Yes, go, right? yes, because I think they were by the time the interview panel members from the morning itself they are taking interviews, so they also for them it also becomes kind of monotonous. So they also want to change things up a bit. Okay, all right. So what are the, questions that you think you were not able to answer there? And then, how did you handle the situation? The primarily, ma'am, the questions were from, as I earlier mentioned, were from accounting. They asked me some terms related to balance sheets, and I clearly had no idea because after I knew what a balance sheet is, and that's it, a two-line definition. So I just mentioned to them, sir, that because I have not studied this particular branch in detail, I just know the surface level information. And in future, I'll work upon it because in my upcoming job, it will it will be required for me to study accounts. All right. So did that make you nervous, not knowing the answer? Because, ma'am, for this, you should always have a mock interview first. Because and also what helped me in my college placement, we had a lot of interviews from various companies and mock interviews beforehand as well. So that has opened that has removed the fear of interview from many times. What happens is college freshers or people who don't have a job experience, when they face an interview, they have still have the kind of fear inside them about the interview, because that side has been taken care of me in the college placements itself. So I think if you get a college placement, definitely you should join. Even if you work there for 1 year, that will change, just add so much to your resume, so much to your experience, and your whole worldview of competitive exams and interviews will change. Right. And those who just could not get a chance for a college placement interview, maybe they should opt for some mock interviews because, Definitely. going prepared is. Even if you are a very experienced professional, still a mock interview is necessary because it shows you your blind spots. Your blind spots are very important. Cover as much blind spots as you can. There will be a few blind spots because for example, accounts, I was not expecting honestly any question on accounts. Accounts question came. I had prepared very seriously about MSMEs and all the schemes, and I've gone through the SIDBI website completely. Wrote down, made my notes. I was expecting a lot of questions on SIDBI, not so many questions on SIDBI, and more questions on the basics. ओके अभिषेक वन मेन क्वेश्चन दैट आपने मेंस की, ये मैं हिंदी में पूछूंगी बिकॉज सो मेनी पीपल Yes, सब लोग जानना चाहेंगे दैट आपने हर स्टेज की तैयारी करी, आपने आईबीपीएस भी दिया, फिर आपने सिडबी का दिया, सिडबी के आपने रिटन की तैयारी करी होगी, फिर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करी होगी, एंड देन यू मूव्ड टू द इंटरव्यू स्टेज, राइट? तो जितनी हर स्टेज में तैयारी थी, तो कईयों को लगता है ना कि कई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि प्रीलिम्स हो गया, चलो बहुत कुछ हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव की शायद उतनी तैयारी नहीं करेंगे, राइट? या वो भी क्लियर हो गया, सो देन दे विल थिंक कि इंटरव्यू में मे बी उतना रिक्वायरमेंट नहीं है. बट हमने जो हमेशा एडवाइस किया है, that what I have felt personally, that interview को भी उतनी ही importance we should give जितना you give it to your prelims. So what do you think, कि कितनी importance हमें हर स्टेज को देनी चाहिए, और इंटरव्यू को क्या, बिकॉज सम वेटेज, लोगों को लगता है कि वेटेज थोड़ा कम होगा मे बी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दो. व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस इंटरव्यू स्टेज? अब जैसे मैं अगर अपने मार्कशीट बताऊं आईबीपीएस मेंस में, तो आउट ऑफ मेरे जो स्कोर था वो था 88.25 मेंस में. जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अराउंड था 95 to 105. तो जब मेरे नंबर पे आया तो मुझे थोड़ा शॉक सा लगा था. बट उस 88.25 में 50 मार्क्स वर इंग्लिश और जो डिस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्टिव. तो इसमें भी इंग्लिश का बहुत रोल रहा. अब आती है इंटरव्यू. इंटरव्यू में जैसे कि जनरली 20 to 25% वेटेज होती है लास्ट स्टेजेस में, और ये तकरीबन हर तरह के ऑफिसर एग्जाम में ये 25% से नीचे ही रहती है. इससे ज्यादा इंटरव्यू की वेटेज वो रखते भी नहीं. ज्यादा वेटेज मेंस की. इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थे 82. उन 82 मार्क्स की वजह से जो मेरा फाइनल स्कोर था वो कट ऑफ से 3 से 4 नंबर ज्यादा था, और मेरे को इजीली कैनरा बैंक अलॉट. तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार इंटरव्यू के मार्क्स में मैटर नहीं करते, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके मेरे से मेंस में नंबर ज्यादा थे, करीबन 10 मार्क्स ज्यादा थे, बट इंटरव्यू में
उनके आउट ऑफ 100 50 नंबर ही लगे, जिसकी वजह से उनको फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, उनका शायद नाम वेटिंग लिस्ट में। तो आप किसी भी स्टेज को लाइटली नहीं ले सकते। हो सकता है इंटरव्यू की वजह से ही आपका रैंक इम्प्रूव हो जाए, आपको जो बैंक चाहिए आपको वो बैंक मिले। अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं हो सकते, आपको जो आपकी लास्ट प्रेफरेंस है वो शायद आपको बैंक मिले। राइट अभिषेक। सो अभी जैसे आपने आईबीपीएस के बारे में बताया, सिडबी के हम्म, एग्जाम एक्सपीरियंस स्टार्ट टू एंड कुछ बताएंगे हमें हम्म। प्लीज? तो सिडबी में मैम, जैसे कि आईबीपीएस में तो मेरा आइडियल परफॉर्मेंस नहीं हुआ था क्योंकि रीजनिंग में अच्छा नहीं हुआ था, और मेंस में भी मेंस का जो मैथ्स का पोर्शन था वो बहुत ही टफ था। जैसे कि हम कट ऑफ से भी देख सकते हैं, कट ऑफ आउट ऑफ 62.25 ही गई। तो आप देख सकते हैं कि पेपर काफी टफ था। अब पिछले साल की अगर हम कट ऑफ को देखें, सिडबी में जो मेरा प्लान था वो ये था कि क्वांट और रीजनिंग में, जो कि टोटल 120 का होता है, तो उसमें मेरा टारगेट था 85 करने का। और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में नियर अबाउट इसको 65 मार्क्स आउट ऑफ 80, क्योंकि इंग्लिश मेरी अच्छी है, जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा है, और डिस्क्रिप्टिव में भी उसी हिसाब से, ताकि मेरा जो पहले जो ऑब्जेक्टिव है आउट ऑफ 200 उसमें ही 160 के आसपास चला जाए। अगर वहां से ही मेरे ख्याल, और उसके बाद जो रिटर्न जो होगा, तो उसी हिसाब से हमारे नंबर जो अब बढ़ेंगे। जितना आप रिटर्न नंबर ज्यादा ले सकते हैं उतना ही आपको फायदा है, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको फिर ये है कि आपको तीन, जब उसकी जो वेटेज लगती है तो 3 से 4 नंबर का ही फर्क पड़ सकता है। बट अगर आपके रिटर्न में अच्छे हैं, और रिटर्न में जैसे कि जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा देखते हैं। जैसे मेरे को याद है क्वेश्चन था कि पैन रजिस्ट्रेशन की क्या फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी। अब मुझे वो आंसर आता था। अब जनरली ये मैनुअल्स में पढ़ाया तो जाता नहीं, और मुझे क्यों आता था, राइट क्योंकि राइट। प्रैक्टिकल मैंने नॉलेज। अपनी, हाँ, मैंने अपनी सिस्टर का पैन अप्लाई करा था कुछ टाइम पहले ही, तो मेरे को वो फीस याद थी कि इतनी लगी थी पैसे। तो वो भी कई बार आपकी जो लेटरल नॉलेज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मैनुअल्स होते हैं बड़े बड़े, अराउंड 150 पेजेस पर मंथ, अरे उसको पूरी तरह याद करके आते हैं, वो है कि वो तो एक मेमोराइजेशन है। हो सकता है कि आप वहां जाके भूल जाए, क्योंकि इतना हर डेली फाइनेंस की न्यूज आ रही है, डेली बैंक्स की न्यूज आ रही है, कोई नई नई स्कीम लॉन्च हो रही है, और कई स्कीम का तो नाम भी बहुत सिमिलर टाइप होता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं इंसान। इसका आंसर ये था कि ये। और राइट बाकी राइट। जैसे मैथ्स मेरा अच्छा गया, देन अगेन कि आपको पैनिक नहीं करना है। जैसे मैंने सोचा था कि अराउंड 30 क्वेश्चंस करूंगा रीजनिंग के, बट मेरे 24 हुए, पर मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाकी मेरा सब अच्छा गया जितना जैसा मैंने प्लान करा था। बाकी बाकी सारे सेक्शन में वैसे हुआ। एक दो सेक्शन आपके खराब जाते ही जाते हैं, वो रियल आउटपुट और आइडियल आउटपुट का जो डिफरेंस होता है वो यही होता है। राइट राइट। सो आपने इतना कुछ बताया हमें, सो डू यू थिंक दैट लक आल्सो प्लेज सम इम्पोर्टेंट रोल? यस मैम, लक इन द सेंस कि जैसे कि ये तो कंपटीशन, अभी हो सकता है, अभी जैसे कि हम 100 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए, अराउंड 51 वेटिंग में है। हो सकता है वेटिंग में वो एक एक नंबर, एक एक दो दो नंबर से दिए जाए। हो सकता है कि जिस क्वेश्चन का आप दो कैंडिडेट्स ने 50-50 करके करा, एक का सही हो गया, एक का गलत हो गया, और सिलेक्शन उसकी जो जिसका सही होगा उसकी सिलेक्शन होगी। तो ये लक का फैक्ट, देखिए ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, और आपको अभी ये नहीं सोचना है कि अगर मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं तो मैं किसी से कम हूँ या मेरे अंदर कोई खोट है। ये जब तक आप ये सोच अगर आपके दिमाग में आ गई, तो ये आपके मतलब मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है। आपके रिलेशंस भी मतलब ये स्पॉइल कर सकते हैं अगर ये इस टाइप की सोच है। राइट। और मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हम ना जितना, कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा शाय होते हैं एडमिट करने में कि हाँ हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर नहीं हम्म, हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग हम्म, बोलेंगे कि नहीं हुआ। सो आई थिंक कि आप तब तक एक चीज को, मतलब आप तब नहीं कह सकते कि मैं उसको अचीव, मतलब यू कैनॉट बी श्योर कि आप उसको अचीव कर लोगे अनलेस आप उसको 100% दे दो। और 100% क्या होगा कि यू जस्ट फॉरगेट कि दुनिया क्या बोलेगी क्या करेगी, आप छोड़ दो। यू जस्ट सीक ऑल द हेल्प दैट यू वांट एंड दैट यू नीड, और वो हेल्प जहां से मिल रही है, जहां से जो सीखने को मिल रहा है वहां से वो सीख लो। दिस इज व्हाट हम्म, आई थिंक इन माय ओपिनियन। हम लोग बहुत ज्यादा शाय हो जाते हैं कि क्या बताना हम्म, सबको कि हम एग्जाम दे रहे हैं, और इस चक्कर में हम हेजिटेट भी करते हैं अपने कुछ डाउट्स पूछने में या कुछ ऐसी चीजें कुछ हम्म, बात करने में
कई हो सकता है कि कोई इंसान हमें अपना एक्सपीरियंस ही बता दे और उससे हमें हेल्प मिल जाए, राइट? सो दिस इज व्हाट इवन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस, टू योर पॉइंट्स, कि हमें थोड़ा बहुत लक है तो हमें थोड़ा वी हैव टू गिव आवर इंटायर सेल्फ फॉर वन एग्जाम टू क्लियर इट, राइट? तो वो तो अभिषेक मैम आपसे, हाँ जी प्लीज। एफर्ट, बिना एफर्ट्स के तो ये नहीं निकल पाने एग्जाम, क्योंकि राइट राइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इंडिया में है उनका, चाहे अब ग्रुप सी के भी एग्जाम्स हैं, यानी स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स हैं, आप क्वेश्चन हर जगह ही टफ आ रहे हैं। जो आज से पहले राइट कुछ साल पहले अगर ग्रेड ग्रुप ए ऑफिसर्स के क्वेश्चंस का लेवल था, आजकल वो ग्रुप सी का राइट है। क्योंकि राइट मैं फील करता हूँ कि इसका रीजन जो एक मुझे समझ आ रहा है कि अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और क्वालिटी एजुकेशन बढ़ रहा है, पहले नहीं था। एग्जैक्टली, खासकर एंड इवन द कंपटीशन। कंपटीशन इसीलिए ताकि बच्चे उतनी ही मेहनत करें, तो इसलिए एग्जाम का लेवल भी बढ़ा है। राइट राइट और इंटरव्यू में आपकी जेए का कितना रोल था इन द इंटरव्यू प्रोसेस? सॉरी मैम, मैं समझ नहीं पाया। जनरल अवेयरनेस, सॉरी, आपके जनरल, इंटरव्यू प्रोसेस में ओके ओके। जनरल अवेयरनेस का कितना रोल रहा? जनरल अवेयरनेस मैम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि पंजाब में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कौन से, तो मैंने उसको लिंक किया कि सर जैसे सिडबी में, सिडबी के दो ऑफिस है पंजाब में, वन इन लुधियाना और वन इन जलंधर। ये मैं देख कर ही गया था सिडबी के ज्यादातर ऑफिस कहाँ पर है, उनकी वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने वही बताया कि मेन हमारी जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है पंजाब में वो जलंधर है और लुधियाना है। जलंधर ज्यादा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए और हजरी ज्यादा लुधियाना में है। उसके बाद एक मेगा फूड पार्क जो फाजिल्का में ओपन हो रही है, उसके बारे में था। और जैसे कुछ टाइम बाद ही उन्होंने, जिन सर ने ये मेरे से पूछा था पंजाब के बारे में, उन्होंने पंजाब का नाम का रीजन पूछा। फिर उसका फॉलो अप क्वेश्चन था कि फाइव रिवर्स। एंड इसके अलावा अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो जैसे कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन चीजों का, तो आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में डाइवर्जेंस है बेसिकली। आपको उनके बेसिक पर ये नहीं, अब आपको ये चीजें नहीं वो पूछते कि ये पिछले महीने का क्या था इस महीने, या अगर बिल्कुल उसी हफ्ते आया हो ना, डाटा डेटा रिलीज ही हो, तब वो ज्यादा पूछते हैं। ये कई बार बच्चे ये कहते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने, आपको रेंज पता होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि अगर कोई डेटा है वो 5% है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 to 6% के अराउंड है। अगर आप इंटरव्यू में बोल के आ जाओ कि 50% है, वो तो ऑब्वियसली गलत हो। आपको रेंज पता होनी चाहिए। So you mean to say कि we don't only have to mug up, we need to absorb what we are reading, है ना? हमें Yes, उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, राइट? यस मैम, क्योंकि मैम आजकल की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। जैसे आजकल अगर मेरे को कोई एग्जैक्ट डेटा और स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो मेरे को याद करने की जरूरत नहीं, मैं अपने मोबाइल से वो देख कर सकता हूँ अंडरस्टैंड। बट अगर मेरे कंसेप्ट सही हैं, तो क्योंकि तभी मैं उस डेटा से इंफॉर्मेशन बना सकता हूँ। डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही फर्क है, और एज एन ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डेटा से। राइट अभिषेक, तो अगर इंटरव्यू के लिए कोई केवल सिडबी की वेबसाइट से पढ़ के जा रहा है, इज दैट हम्म। इनफ कि उनको अवेयरनेस भी जरूरी है? नहीं मैम, अवेयरनेस डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि सिडबी के बारे में तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा, क्योंकि देवर एक्सपेक्टिंग कि अगर एक सीरियस कैंडिडेट है तो वो सिडबी की वेबसाइट को अच्छे से पढ़कर आया ही हो। दे वांटेड टू सी कि राइट। कंसेप्चुअली एक पर्सन कितना कैपेबल है। और बजट से कितना पूछा? बजट से भी मैम ना के बराबर। ओके। ओके अभिषेक, आप आगे जो अब एस्पिरेंट्स हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैम पहले तो एक मैसेज होगा कि अगर आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और आपके कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं निकल रहे और बहुत टाइम हो गया फुल टाइम प्रिपरेशन पे कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक अच्छी जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। ये जो हमारी पुरानी सोच है कि प्राइवेट सेक्टर पता नहीं कैसा है, मैं खुद एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करके आया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और अगर आपको अच्छे सीनियर्स मिल जाए तो आपको पढ़ने का भी टाइम, इससे क्या होता है कि अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो टैग होता है, ये इसके सबसे ज्यादा स्ट्रेस। मैं कई कैंडिडेट्स को देखता हूँ जो अपने अब 30s में जा चुके हैं और अभी भी किसी जॉब पे नहीं। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक जॉब पहले लें, सिक्योर करें। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, अलग अलग फील्ड्स में है। उसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। और क्योंकि अब आप जैसे जैसे आई एग्जाम भी जैसे प्लेटफॉर्म है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी
आई एग्जाम भी जैसे प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए क्रिस्प टू द पॉइंट, तो वो जैसे मैम आप प्रोवाइड करके देंगे, आपको पूरा दिन उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, और ये आपके स्ट्रेस Yes, पे that's भी अच्छा है। Yeah, thanks for highlighting that, Abhishek. Crisp information बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हम यस लोग मैम। इतना कुछ भी रिलाई ऑन इंटरनेट सो मच. आजकल इतना हो गया है, सब कुछ गूगल कर लो. बट देन क्या क्या, हाउ मच कैन यू स्टडी फ्रॉम द नेट, राइट? सो क्रिस्प इंफॉर्मेशन इज वेरी. कॉल इट द मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अभी अगर आप नेट पर सर्च करो कि बैंक कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, देयर विल बी अ प्लेथरा ऑफ इंस्टीट्यूट्स, अब पता नहीं लगता कि कौन सा सही है कि कौन सा जेन्युइन है, या इस पे कौन रिजल्ट्स बाय कर रहा है या कौन जनरली प्रोड्यूस कर रहा है। राइट तो राइट राइट. इसके लिए तो आप जितना पहले खुद के बेसिक्स अंडरस्टैंड करें, एग्जाम पैटर्न को समझें, और फिर जो टीचर एग्जाम पैटर्न और उसकी नेचर पे बेसिस पे बात करता है, उसकी बात को फॉलो करें। और जो सिर्फ आपका कंटेंट बढ़ाने के लिए वीडियोस डाल रहे हैं या पेज व्यूज अपने बढ़ाने के लिए अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं, आप उनसे जरा दूरी। राइट, सो यू मीन दैट वी आर द बेस्ट जज. हमें देख लेना चाहिए खुद ही. आजकल तो हर यस कोर्स कोई भी देगा. यस वी आर सो यस अवेयर कि हमें खुद ही डेमो मांग लेना चाहिए कि आप डेमो यस दिखाओ, व्हाट विल यू डेमो टीच, है डेमो ना? दिखाइए। और पहले ऑल हमें दोस हमारा थिंग्स. खुद का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपके बेस्ट गाइड है किसी भी राइट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आपको सिलेबस एग्जैक्टली. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पता है तो फॉर श्योर आपका नहीं होगा। अगर राइट, ये आपको पता वहां से है तो स्टार्ट आपके करना चांस चाहिए. नहीं। हाँ, और अगर ये दोनों नहीं पता है तो आपके 0% चांस है, फिर तो आप लिख के लीजिए। Right, right, Abhishek. So, Abhishek, thanks a lot for थैंक this यू। wonderful session. And we wish you all the best for your time in SIDBI. And we just hope you keep growing throughout, when till the time you're in the organization. Also, thanks to you because both my interviews, you took my mock interviews, and in Yes, both yes. interviews, I succeeded. I'm hopefully looking for the SIDBI scorecard as well to check how many marks I got, because as a person who's very competitive, I just want to see how many marks I've scored. Yes, yes, and we'll be delighted to see those marks. Share with us if if and when you Definitely, will get definitely. the information. Okay, all the best to you, Abhishek. Thank you, ma'am. Have a nice Okay, day. thanks a lot. Have a nice day, you too.